Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Neetika. Let's check the pulse of stock market. As promised, I have got a stock which has posted very good Q1 results. I will discuss its fundamental and buying level also for the long term and the most important news related to this stock I am going to share. So, to know the buying level for this stock for the long term, stay connected till then and smash the like button now. And yes, subscribe the channel also for these kind of stock. Now, let's start with the name of the stock, which is from construction and engineering sector. Actually, this is the top stock of this sector, and this is the Larsen and Turbo. Yes, LNT. So, LNT has posted very good Q1 results. I will go to the Q1 results later, but first let me discuss the one important news related to this stock, which is actually they have announced, the company has announced, LNT has announced they will give the buyback. They will give the buyback of what? They will give the buyback of rupees 10,000 crore worth of share. So buyback actually is a very good sign for the company if they're buying their share from the shareholder. तो shareholder से वो कंपनी बाय करती है अपने स्टॉक को. वो अपने जो अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो दे विल यूज देयर प्रॉफिट्स इन दिस बायबैक सिस्टम. So buyback is a good sign for the company. Company is showing the confidence in their management and their growth. So they have announced that rupees 10,000 crore worth of share. It's the first ever return of capital to the shareholder. And the company's board has approved the proposal to buy back of 3.33 crore shares. प्राइस क्या फिक्स किया है कंपनी ने? प्राइस फिक्स्ड प्राइस एक्चुअली फिक्स्ड बाय कंपनी इज मैक्सिमम प्राइस इज 3,000 per share. तो अभी एल एन टी इज ट्रेडिंग ऑन आई गेस 2600 समथिंग. आई विल सी द एग्जैक्ट अमाउंट, बट 26,600 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है. एंड दे हैव फिक्स द प्राइस ऑफ 3,000, जो कि आई एम नॉट फाइंडिंग इट्स वेरी गुड प्राइस एक्चुअली. और प्रीमियम पे प्राइस होना चाहिए था, मीन्स और प्रीमियम देना चाहिए था कंपनी को, बट 3,000 इज नॉट दैट गुड प्राइस फॉर द बाई बैक. So I don't know what people will decide, they will go for buyback or not, but this is a kind of a corporate action है. जैसे बोनस देती है, स्प्लिट देती है, वैसे बायबैक देती है कंपनी. So this is the important news which I wanted to discuss related to the stock. So now let me discuss the Q1 result also a little bit. So L&T reported a consolidated net profit for the last quarter, means June quarter. Q1 is rupees 2,493 crore, 2,493, and which is up 46 means 46.5% up from the last year, which was 1702.07, means 1702 crore था last year में. And YOY this year it has increased by 46.5% in this quarter. YOY. Now, if we talk about the revenue is also from operation is last quarter stood at 47,882 crore, and a growth of 33.6%. 33.6% ग्रोथ है, जो कि लास्ट ईयर 35,853 से ज़्यादा है. वाई ओ वाई, तो मतलब वाई ऑन वाई पे 33.6% का रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में 46.5% का ग्रोथ है, और कंपनी का मार्जिन भी बेटर हुआ है. कंपनी हैज अनाउंस द डिविडेंड ऑल्सो. फाइनल डिविडेंड इज एक्चुअली 24 रुपीज का था, और अभी इंटरिम डिविडेंड भी दिया है कंपनी, विच इज आई गेस 6 रुपीज पर शेयर. तो फाइनल डिविडेंड 24 एंड ₹6 इंटरिम डिविडेंड, विच इज 30 रुपीज डिविडेंड per share you all are getting if you have L&T share. And yes, you should know the X date also. The X date is 2nd of August.
तो 2 अगस्त को इनका एक्स डेट है 2023. Is overall what I can discuss in short. I have discussed the Q1 result is perfectly thumbs up from my side. Q1 result is very good. So now we'll discuss the fundamental. If we'll go to the fundamental, we check it is actually थोड़ा सा मैं बता दूं इस कंपनी के बारे में. कंपनी इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर एंड दिस इज द टॉप कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर. L&T को हर कोई जानता है, यू ऑल नो, एंड दिस इज अ लार्ज कैप कंपनी. So L&T is the top company from the construction and engineering which is large cap, and we can discuss we can compare the peer also. तो peers में अगर देखें तो L&T नंबर 1 पे है. L&T का CMP means trading on 2650. yes, 2650 पे ये ट्रेड कर रहा है. और आई जस्ट जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि 3000 का इनका बाई बैक प्राइस है 3000 का. तो इतने प्रीमियम पे कंपनी ने दिया. तो 2650 पे कंपनी इज ट्रेडिंग. पीई इज 33.27, 33 है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा है. थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड है. मार्केट कैप बट इट्स एक्चुअली ठीक है, इट्स ओके. मार्केट मार्केट कैप इज लार्ज कैप कंपनी. तो मार्केट कैप इसका 3,72,413.53 में 3,72,413 का मार्केट कैप है, जो कि सबसे बड़ा है. If I go on dividend yield, we can see it is 0.91%, which is good dividend. Quarter profit is good, 46.47, 46 point. Quarter profit growth is 46.47, which is good. And ROC, if we see ROC 12.36, which is also okay. Means okay, not very good, yes, but okay. Debt to equity is 1.3%. That means company is working on debt, which is little bit negative sign for me. But 1.35 का debt है, which is the fact that I am keeping. ROE is 11.6, means almost around 12% का ROE है, which is also average, is kind of okay, average, not very good. EPS 80 प्लस शेयर कोई भी नहीं है. फ्री कैश फ्लो इज गुड, 18,983 में ऑलमोस्ट 19,000 का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास. अगर इनके पीयर्स में देखें तो एक ये कंपनी है जो कि रेलवे की है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका भी ROH है, बट बाकी के पीयर्स में ये कंपनी बेस्ट है. तो दिस इज फंडामेंटल विच आई फाइंड इज गुड, ओके. हाँ, बट कंपनी इज ऑफकोर्स शोइंग ग्रोथ, इम्प्रूविंग. तो देर इज एंड कंपनी बहुत ज़्यादा इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं. हर कोई जानता है कि L&T को बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं. तो दिस कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. So now we have come to the L&T chart to discuss the technical level and its buying level for the long term. So L&T is trading at 2,650. Abhi you don't have to jump in this stock, which is it is on very high level. It has touched its resistance, or it is trading at resistance level also, which is 2670 के आसपास. तो 2670 पे ये अभी रेजिस्टेंस लेगा एंड वहां से इट मे फॉल अगेन टू डाउन साइड, बिकॉज ये एक बायबैक का न्यूज भी है, जो कि प्राइस इसका 3000 है, जो कि आई थिंक शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइकिंग दिस प्रीमियम प्राइस. सो मे बी इट विल फॉल अगेन, एंड डेफिनेटली इट विल फॉल, बिकॉज कि इतना रन अप कर चुका है, तो अब ये फॉल तो करेगा ही करेगा. सो यू डोंट हैव टू जंप इन नाउ, you have to wait, you should wait actually to fall it till 2500 to 2400 तक. 2500 तो आएगा ही आएगा, it will definitely come. I am on long term chart, I am talking about long term. तो 2500 it will come, but the perfect price to buy this stock is 2400, 2004 या 20
बीजीएमए का भी एक अच्छा सपोर्ट है इसका, जो कि वही वही 2400 के आसपास ही है। तो 2400 के आसपास बेस्ट प्राइस टू बाय दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज वेरी गुड स्टॉक। और टारगेट तो इसका 3000 प्लस के ऊपर होगा ही होगा। Buying level for the LNT for long term can be 2400 to 2500, and of course for the target more than 3000. Yes, 3000 plus, of course. To know the buying level for Ashok Leyland, click the right button, and to know the buying level for the Sipla, click the left button. I will come up with the more these kind of stock. Stay connected. Signing off.